friends, so today we will study types of nutrients. Means we will study nutrients. Do you know what are nutrients? Don't know? Let's study about it. But if you have not subscribed my channel or you are new on my channel, so please subscribe, and if you love this video, please like and share it with your family and friends. So, the substance present in food items required by our body is known as nutrients. मतलब जो फूड आइटम्स के अंदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं और हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, एसेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं, उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. There are mainly 5 types of nutrients: carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals, calcium. So let's study about them. Carbohydrates. Carbohydrates gives us energy. That's why they gives us energy. That's why they are known as energy giving food. Okay. The example of carbohydrates are cereals, wheat, etc. They are energy giving food. Carbohydrates. Grains contain carbohydrates. Fats stored in our body in the form of reserve food. Okay. So we will write reserve food. Reserve food means जितना फैट कंटेनिंग फूड खाते जाएंगे वो आपकी बॉडी में स्टोर होता जाएगा, तभी आप मोटे हो जाएंगे, फैटी हो जाएंगे. ओके. एंड लाइक फिर उसके बाद आपने कभी फास्ट रख लिया तो आपका जो आपकी बॉडी को आपके जो फैट है उससे एनर्जी मिलेगी. ओके. The example of fat containing food is oil, butter, etc. Next is protein. It is bodybuilding food. Which food? Bodybuilding food. Body building food. लाइक कभी अगर कोई जिम ज्वाइन करता है तो उनका जो ट्रेनर होता है वो उनको सबसे ज़्यादा प्रोटीन कंटेनिंग फूड्स खाने को बोलता है. द एग्जाम्पल इज एग, फिश, मीट, एंड इफ यू आर वेजिटेरियन सो pulses, etc. Okay, next, vitamins and minerals. They are protective food. They protect us from diseases and germs by fighting against them. Protective food. Example: fruits and vegetables. Okay, fruits and vegetables. They are needed by our body in a very small quantity. Next is calcium, and everyone will ask at the last, if there are only 5 nutrients, then what are these two? I will explain it at the last. Okay. So last but not the least, calcium. Calcium makes our bones strong. Make bones strong. Example: milk,
etc. Milk and milk products, milk products, dairy products, etc. Okay. Next, roughage and water. Roughage is not a nutrient, but it is the fibrous part of your diet, of our diet. roughage like अगर आप अपने खाने के साथ मतलब आपके मील के साथ डाइट के साथ सैलेड वगैरह लेते हो लाइक टमेटोज cucumbers onions that salad is known as roughage. Okay, it is the fibrous part. It helps in digestion, Okay, it helps in digestion. Wait, roughage and water both helps in digestion. Okay, they both helps in digestion. And water maintains our body temperature too. Our body temperature. Okay. So, these are nutrients. Roughage is not a nutrient, but it is the fibrous part. Okay, wait. Fibrous part. Salad. Okay. It helps in our digestion. Okay. Water maintains our body temperature. So, like अगर आप एक प्रॉपर डाइट लेते हो, like मैंने बैलेंस डाइट आपको बताई थी. So बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है, like आपकी जो रोटी चावल मतलब आप लेते हो वो होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग. नेक्स्ट, फैट कंटेनिंग. लाइक आपका जो ऑयली थोड़ा सा होता है, लाइक कभी बनता है ये पूरी पराठे ये सब कभी बनता है. सो दे आर फैट कंटेनिंग. प्रोटीन कंटेनिंग आपकी पल्सेस. डेली आपके खाने में पल्सेस तो होती ही हैं, सो दैट आर प्रोटीन कंटेनिंग. विटामिन एंड मिनरल्स. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. लाइक आप स्नैक्स टाइम पे क्या कहते हैं टी कॉफ़ी इन सबको छोड़कर अगर आप फ्रूट सैलड लें, ओके, वेजिटेबल्स आपकी जो सब्जी होती है खाने के साथ वो भी विटामिन एंड मिनरल कंटेनिंग होती है. देन कैल्शियम. हर किसी को टी मतलब बेवरेजेस को छोड़ के टी एंड कॉफ़ी को छोड़ के मिल्क का यूज़ करना चाहिए. लाइक अगर आपने खाना खा लिया है तो आपको सोने से पहले और सुबह दोनों टाइम मिल्क पीना होगा, जिससे आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग होंगी. एंड आप ले सकते हैं दही मीन्स कर्ड. आप दही ले सकते हैं और छाछ ले सकते हैं, एनीथिंग. roughage, you have to take salad like onion and cucumber, tomatoes, okay, and water. आपको daily children to adult everyone have to drink 6 to 8 glasses of water or 8 to 10 glasses of water, okay, in a day. एंड एक चीज़ याद रखिए, अगर आपने खाना खाया है तो आपको खाना खाने के 1 to 2 minutes आफ्टर पानी पीना चाहिए. ओके, सो अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी तो इसे लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. मेरे चैनल क्यूट टीचर आरू को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड मुझसे मिलते रहें मेरी हर वीडियो में. ओके, so eat nutrient
containing food and eat healthy food, stay fit, healthy, happy. And bye. Your own cute teacher Aru. Have a nice day.